Um, this lecture will cover uh, the viral replication, and will study in each of the cells, in each of the host cells, which viruses infect. So the viral replication in general, if we talk about viral replication, how they are going to reproduce inside a host cell, that depends upon these five steps. Every viral, every virus go through these five steps to replicate themselves inside the host cell. First one is adsorption. Adsorption is also known as attachment of the viruses to the host cell. Then comes penetration. Penetration means the entry of the virions or their genome. Genome means either RNA or DNA into the host cell. Then synthesis. Synthesis means the synthesis or the making or the manufacturing of new nucleic acid molecules, capsid proteins, and other viral components within host cell while using the molecular machinery of those cells which they infect. Then comes maturation. Maturation is the assembly of newly synthesized viral components to make a complete virus or virion. Then is the release, the departure of new virions from the host cell. Release generally, but not always, kills the host cells. They don't the virus not necessarily kill the host cells, and the viruses have different mechanisms for different species. For example, if we talk about viral replication in bacteria by bacteriophages, that is different from that of the animal virus. Bacteriophages or simply phages are the viruses that infect bacterial cells. Phages were first observed in 1915 by Frederick Trott in England and in 1917 by Felix d'Herelle in France. D'Herelle named them bacteriophages, which means eaters of bacteria. They are complex. They have a complex shape. They are complex shaped viruses that are the most abundantly studied viruses right now. They are being used for different therapies as well, and they are studied well as they are used as a model, viral model for study. So, like other viruses, bacteriophages have their genetic information in the form of either DNA, that may be double stranded or single stranded RNA, and they can be relatively simple and complex in structure. To understand phage replication, we can examine easily T-even phages. T-even phages are named as T2, T4, T6. T means the type of bacteriophage that is being studied. They are complex, but they are well studied naked phages. That means they are not enclosed in an envelope, as you can see, and they have T4 phages, especially they are obligate parasites of the common enteric bacterium. Enteric bacterium means the bacteria that is being found in our intestines, the E. coli. E. coli T4 has a distinctly shaped capsid made of a head, collar, and then tail. This tail has a tail sheath, and then this is base plate, and these are long tail fibers that attach to the host cell. These fibers actually help this phage to attach to the host cell. So these are relatively complex in structure but easy to understand. वायरल रिप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो इन जनरल अगर हम वायरसेस की बात करें तो देर आर 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स ऐसे हैं जिनमें बैक्टीरियोफाज जो है वो बैक्टीरियोफाज कोई भी वायरस जो है वो
किसी भी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करके उसके अंदर नए विरियॉन्स पैदा कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसमें जो 5 स्टेप्स हैं आपके, उसमें सबसे पहले आती है एड्जॉर्प्शन, देन कम्स पेनिट्रेशन, देन सिंथेसिस, मैच्योरेशन एंड रिलीज। इन सब के अलग अलग स्टेप्स इस तरह से हैं कि एड्जॉर्प्शन या अटैचमेंट आपके पास वो स्टेप है जिसमें वायरस जो है वो होस्ट सेल के साथ कोलाइड करता है, अटैच करता है और इतनी देर तक अटैच रहे कि वो अपना उसके अंदर पेनिट्रेशन के स्टेप तक पहुंच सके। पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि उसका जीनोम या वायरस का कैप्सिड जो भी है वो किस तरह से होस्ट सेल के अंदर चला जाए। फिर उसके बाद सिंथेसिस में वो मशीनरी को, जिस होस्ट सेल को वो इन्फेक्ट कर रहे हैं उसकी मशीनरी को यूज़ करते हुए किस तरह से नए विरियॉन्स बना रहे हैं। मैच्योरेशन में उनकी असेंबली होती है, यानी जो अलग अलग पार्ट्स बनते हैं सारे एक साथ नहीं बनते, अलग अलग पार्ट्स जो बनते हैं उनको असेंबल करते हैं और उसके बाद रिलीज़ उनकी होती है। तो रिलीज़ करते वक्त ज़रूरी नहीं है कि वायरस जो है वो होस्ट सेल को, ज़्यादातर तो होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पर नॉट नेसेसरीली ये तमाम होस्ट सेल्स जो हैं इससे लाइस हो। वायरसेस के डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं डिफरेंट स्पीशी के लिए। फॉर एग्जांपल प्लांट वायरसेस के लिए कोई इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो अब तक सामने नहीं आए, यानी कोई रिसेप्टर्स या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती प्लांट सेल्स में। दे जस्ट एंटर इनटू द प्लांट एक्सीडेंटली थ्रू द वेयर्स एंड टेयर्स ऑफ द प्लांट, जो कि किसी आपके प्लांट ईटर की वजह से आ सकता है या किसी भी तरीके से अगर प्लांट में कोई भी डिस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी सेल वॉल की डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसके थ्रू जो है वायरसेस वहाँ पर एनिमल्स या उनके साथ जो लगे हुए होते हैं इंसेक्ट्स के साथ वो वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाते हैं एंड देन दे गो फ्रॉम वन सेल टू अनदर। जबकि अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करें, बैक्टीरियोफेज इज़ द वायरस दैट एक्चुअली डिस्ट्रॉयज बैक्टीरियम। और T4 बैक्टीरियोफेज की बात करें हम, तो ये T4 टाइप जो है वो इकोलाई को इन्फेक्ट करता है और बहुत अच्छी तरह से स्टडीज़ को किया गया। तो इसके डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं, नेकेड है ये, लेकिन इसका एक हेड होता है, फिर ये कॉलर है, फिर ये इसकी शीथ है, टेल शीथ है, फिर बेस प्लेट है और फिर ये लॉन्ग टेल फाइबर्स है। ये एक कंप्लीट आपके पास एक कॉम्प्लेक्स लेकिन जस्ट लाइक अ मशीन और रोबोट, ये एक T4 बैक्टीरियोफेज मौजूद है जो कि ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है। रिप्लिकेशन जब हम देखते हैं बैक्टीरियोफेजेस की, तो बैक्टीरियोफेज जो है उसमें केमिकल अट्रैक्शन होती है, जिसका मतलब है कि कोई एक स्पेसिफिक प्रोटीन रिकॉग्निशन होती है जो इसके टेल फाइबर्स के अंदर मौजूद होती है और वो होस्ट सेल की स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाकर बाइंड कर जाता है। T4 बैक्टीरिया के सेल वॉल पे जाके अटैच करता है, वेयरएज अदर फेजेस, यानी जो T4 की अगर हम टिपिकली बात करें क्योंकि हम उसी को एज अ मॉडल ले रहे हैं, तो T4 अटैचेस टू सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, वेयरएज अदर बैक्टीरियाज, अदर बैक्टीरियोफेजेस, दे बाइंड टू पिलाई और फ्लैजिला ऑफ द बैक्टीरिया। penetration, when they attach long enough to the host cell, that is E. coli, then they penetrate with the help of an enzyme that is known as lysozyme. The lysozyme is being present at the phage tail and it weakens the cell wall of the bacteria, and the hollow tube above the tail fibers, that is the base plate, like base plate, they get entry into the weakened cell wall and then into the cell membrane. The viral DNA then travels from the head to tail and then penetrates into the cytoplasmic space inside the cell membrane. एड्जॉर्प्शन में केमिकल अट्रैक्शन होती है, यानी एक स्पेसिफिक प्रोटीन की रिकॉग्निशन की वजह से वो टेल फाइबर्स जो हैं होस्ट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर साइट है उससे जाके बाइंड कर जाते हैं। T4 जो है वो सेल वॉल की, बैक्टीरिया की सेल वॉल पे अटैच करता है, जबकि दूसरे फेजेस जो हैं वो पिलाई या फ्लैजिला के ऊपर जाके अटैच होते हैं। उसके बाद एक एंजाइम जो टेल फाइबर में ही मौजूद होता है, टेल में मौजूद होता है T4 के, वो सिक्रीट होना शुरू होता है, दैट इज़ लाइसोजाइम। दैट एंजाइम
वीकन्स द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, उसके सेल वॉल को वीक कर देता है। और वहाँ पे जो टेल फाइबर के जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं, जैसे ये टेल है, इधर आपको नज़र आ रही होगी ये वाली जगह, दिस होल, ये इसको जाकर अटैच होता है पहले सेल वॉल पर एंड देन इनटू द सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद ये हेड के अंदर जो डीएनए मौजूद होता है, दैट ट्रेवल्स अलोंग दिस कॉलर, देन दिस शीट, इनसाइड दैट शीट एंड देन इनटू द बेस प्लेट जहाँ से ये अटैच हुआ है। और वहाँ से ये डीएनए बैक्टीरियम के अंदर जो है ट्रैवल कर जाता है, साइटोप्लाज्मिक स्पेस में चला जाता है सेल मेम्ब्रेन के, और इसका जो कॉलर और टेल वाली चीज़ है वो बाहर रह जाती है। Once the phage DNA enters the host cell, it takes control of the metabolic machinery and directs it to make viral protein. एक दफ़ा फेज डीएनए जब अंदर आ जाता है होस्ट सेल के, तो ये मेटाबॉलिक मशीनरी, दैट इज़ क्या, डीएनए क्रोमोसोम जो होता है इसके अंदर, उसके अंदर आकर और फिर उस पूरे सेल का कंट्रोल संभाल लेता है, और उसके थ्रू ये अपनी वायरल प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर देता है। मैचुरेशन में हेड जो है वो असेंबल होता है साइटोप्लाज्म में, और होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और न्यूली सिंथेसाइज कैप्सिड्स बनने शुरू होते हैं। उसके बाद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो हर हेड के अंदर पैक होना शुरू होता है। फिर टेल फॉर्म होती है जो कि बेस प्लेट के थ्रू अलग अलग बेस प्लेट्स बनती हैं, उसके बाद टेल शीट उसके ऊपर आती है, और फिर कॉलर, उसके बाद हेड अटैच होता है टेल के साथ, और एंड में जो है वो टेल फाइबर्स जो हैं वो अटैच होते हैं, और इस तरह से न्यूली फॉर्म्ड इन्फेक्टेड T4 फेजेस बन जाते हैं। देन उसकी रिलीज़ होती है। वी कैन सी इट हेयर इन दिस डायग्राम, इट्स वेरी ईजी, यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली फ्रॉम हियर। ये देखें, द फर्स्ट स्टेप इज़ एब्जॉर्प्शन। द T4 phage attaches itself to the cell wall of the bacteria, and from here you can see this whole covering, that is head, collar and these fibers, they remain outside the cell, and the DNA travels from the head to the inside the cytoplasm of the E. coli. Then what happens when this DNA is being entered, this double stranded DNA entered the cytoplasm of the host cell? What it does, production of phage specific messenger RNA molecules. It produces what? Messenger RNA, जो कि एक आपकी नॉर्मल जो डॉगमा है आपकी प्रोटीन रेप्लिकेशन का, दैट ऑल्सो सेज कि डीएनए मैसेंजर आरएनए बनाएगा, मैसेंजर यानी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, अपनी इनकोड करेगा प्रोटीन मैसेंजर आरएनए को, और फिर वो मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट करेगा टू फॉर्म न्यू प्रोटीन्स। सो व्हाट इट डज कि ये मैसेंजर आरएनए बना रहा है, ठीक है, और and modification of the promoter specificity of the E. coli RNA polymerase. The messenger RNAs serve as templates for rapid production of phage enzymes, some of which are nucleases that degrade the host chromosomes. अब इसमें ये मैसेंजर आरएनए तो कुछ प्रोटीन के पार्ट्स बना रहा है, और कुछ जो है ये इनकोड कर रहे हैं ऐसे प्रोटीन्स जो इस क्रोमोसोम को, होस्ट के क्रोमोसोम को क्या कर रहे हैं, होस्ट के क्रोमोसोम को डिग्रेड कर रहे हैं, इनको पार्टली डिवाइड कर रहे हैं। यू कैन सी इट फ्रॉम हियर इन दिस स्टेप 3. दिस इज होस्ट राइबोसोम, दिस इज T4 DNA, T4 messenger RNA attached to the host ribosomes, and phage specific enzymes. अब यहाँ पे देखें, ये phage specific enzymes, they have degraded this DNA of host cell. Then in 15 minutes continued replication of T4 DNA, first appearance of the code proteins
प्रोटीन्स अब बनने स्टार्ट हो जाएंगे जब ये पूरी तरह से डिग्रेड हो जाएगा। तो अब ये पूरी मशीनरी किन के कंट्रोल में आ गई? ये आपकी वायरल डीएनए के कंट्रोल में आ गई। नाउ दे विल मेक स्पेसिफिक प्रोटीन्स। स्पेसिफिक प्रोटीन्स में आपके पास हेड अलग बनता है जिसमें आपके पास डीएनए पैक हो रहा है, और टेल फाइबर्स और ये टेल शीट जो है ये अलग बन रही होती है। दे आर कंपोज डिफरेंटली, यानी बेस प्लेट पहले बनती है और उसके बाद फिर आपके पास उसका कॉलर बनता है, एंड देन it attaches itself to this head and then tail fibers attaches. Then in 22 minutes lysis of the host cell with the release of 100 to 300 progeniviruses that are the newly formed viruses that can infect other cells. An infectious T4 phages contains a double-stranded DNA molecule packaged in the head of an intricate virion composed of many different structural proteins, and then it is able to infect another bacterium. ठीक है, so this all happens in less than half hour. You can see 3 minutes here, the first step to second step. Then it takes about 15 minutes to reach from there to here, to take control of the whole machinery of the host cell. Then different types of protein make different parts of the viruses, and then in 22 minutes they are ready to lyse the E. coli and then release the new virions. So bacteriophages can either be virulent or temperate. Virulent means that they are strong enough to lyse the cell, to lyse the host cell. A virulent phage is one that has only one option: to begin multiplying immediately upon entering its host cell, and followed by release from the host by lysis. T4 जिसकी हम cycle पढ़ रहे, T4 is an example of the virulent phage. Another one is temperate phage. Temperate phages have two options. Either they can multiply like virulent phages and lyse the host cell upon entering, or they can remain within the host cell without destroying it. So bacteriophage lambda is an example of this type of phage. हमारे पास जब ये साइकिल आप देख रहे हैं, दिस इज़ नोन एज लिटिक साइकिल. इसको हम लिटिक साइकिल कहते हैं, या हम इसको हम लिटिक साइकिल कहते हैं कि ये ई कोलाई यानी जो बैक्टीरियम जो होस्ट सेल है जिसके इन्फेक्ट कर रहा है उसको मज़ीद तबाह किए बगैर, डिस्ट्रॉय किए बगैर ये रिलीज़ नहीं होते. सो एट अ टाइम दे आर एबल टू रिलीज अबाउट 100 to 300 वायरसेस. तो इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, ये वायरुलेंट वायरसेस हैं, ये होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, अपना पूरी साइकिल को कंप्लीट करेंगे, एंड देन दे रिलीज फ्रॉम द विरियन सेल बाय लाइसिस. सो दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज लिटिक साइकिल. इसके अलावा भी हमारे पास दूसरे फेजेस हैं, जैसे टेम्परेट फेज में हमारे पास लैम्डा फेज है. उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं. They can either destroy the host cell just like T4 bacteria, or they can remain in the host cell and remain there in a state, and you can say dormant state, unless it is being activated. So this kind of a relationship between temperate and host cell is called lysogen. The form of virus that remains within its host is called a prophage. It is simply the nucleic acid either integrated into the bacterial chromosome or free in the cytoplasm. Infected bacteria are called as lysogens or lysogenic bacteria. अगर हम बैक्टीरियोफेजेस की बात करें जिस तरह से, उसमें मैंने आपको बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस. T4 जिसकी एग्जांपल अभी हमने प्रीवियसली देखी, दिस साइकिल इज़ नोन एज लिटिक साइकिल बिकॉज इट इज़ एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द होस्ट सेल थ्रू लाइसिस. एंड अनदर वन इज़ लाइसोजेनिक और लाइसोजेनिक साइकिल. इसमें क्या होता है, दे हैव टू ऑप्शंस. आइदर दे कैन लाइज द सेल जस्ट लाइक T4, or they can remain in the cell
and remain there and reproduce themselves whenever the cell divides. ये दो तरीक़े से हो सकता है. Either they can be in a free form like this is the bacterial, the red one is the viral DNA, or they can integrate themselves with the DNA of the host. You can see here कि ये जो पूरी कंप्लीट क्रोमोसोम था इसके साथ खुद ये अटैच हो गया है आपका वायरल DNA. और जब जब ये सेल डिवाइड होगा ये उसके साथ साथ इन जनरेशन बाय जनरेशन ये डिवाइड हो के उन सेल्स के अंदर मौजूद रहेगा. सो दिस इज़ एक्चुअली नोन एज प्रोफेज. दिस टाइप ऑफ अ सेल, ये जो इन्फेक्टेड सेल है जिसकी क्रोमोसोम के अंदर यानी जिसके डीएनए के अंदर ये खुद इंटीग्रेट हो गया वायरल डीएनए, दिस टाइप ऑफ सेल इज़ नोन एज लाइसोजेन. और इस तरह के फेज को हम कहते हैं प्रोफेज. यह है क्या? सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है जो इंटीग्रेट हो गया या फ्री भी रह सकता है, आइदर फ्री और आइदर इंटीग्रेटेड फॉर्म में. ठीक है. सो दे रिमेन नॉर्मल बट दे सीम लाइक नॉर्मल. अब हुआ क्या, देखें, द फेज डीएनए अटैचेस इटसेल्फ, ठीक है, एंड देन इट रिलीजेस इट्स डीएनए फ्रॉम हियर. This is the bacterial chromosome. Now the phage injects its DNA into cytoplasm. From here, it has two options, either this way or either that way. Either this way or that way. If you're talking about this way, it will replicate itself just like the T4 bacteria, making proteins, then making different parts of their virus, and then assembly and then release from the host cell through lysis. And in another way, they can integrate themselves with the chromosome of the virus, and in this condition it is known as a prophage, this viral chromosome. And then whenever the cell divides, this prophage DNA is copied with it, unless and until there is some external stress such as UV light or some nutrient deprivation or whatsoever, which causes it to separate itself from the chromosome of the bacteria. And when it does that, then it will enter into lytic cycle. ठीक है. In this way they remain normal, but they have two characteristics. What two characteristics? When they enter this lysogenic cycle, ये appear हो रहे normal, आपको बिल्कुल normal लगेंगे, and then they divide themselves. जब नए नए cells बनते जाएंगे, daughter cells, ये उनमें replicate होता जाएगा, ये उसमें copy होता चला जाएगा. कोई इसकी फंक्शन में आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, लेकिन दो कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह के सेल्स में बिल्ड हो जाते हैं. वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? द फर्स्ट वन इज़ दैट दे कांट बी रीइंफेक्टेड विद द सेम वायरस, सो दे बिकम इम्यून टू सुपर इन्फेक्शन. यानी कोई इसी बैक्टीरिया को, जो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया है, इसको अगर कोई दूसरा लैम्डा वायरस इन्फेक्ट करना चाहेगा तो वो नहीं होगा, यानी ये उससे इम्यून हो जाएगा. और दूसरी बात ये, when they reproduce, the prophage is replicated in and inherited by progeny cells. This can continue for generation until conditions arise that cause the prophage to initiate synthesis of phage proteins and assemble new virions by a process which is known as induction. Induction is commonly caused by growth changes or by UV radiations. As a result of induction, lysogenic cycle ends and the lytic cycle commences or begins like this. So why another important outcome of lysogeny is lysogenic conversion. Lysogenic conversion, this occurs when a temperate phage changes the phenotype of its host.
लाइसोजेनिक कन्वर्जन एक चीज़ होती है कि एक और जो कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट इज़ लाइसोजेनिक कन्वर्जन। उसके अंदर क्या होता है कि टेम्परेट फेज जो है वो अपनी होस्ट की फिनोटाइप यानी उसकी जनरल फिजिकल जो अपीयरेंस है उसको चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल, member of genus Salmonella is infected by epsilon phage. The phage changes the activities of several enzymes involved in construction of carbohydrate component of bacterium's lipopolysaccharide. This eliminates the receptor for epsilon phage, so the bacterium becomes immune to infection by another epsilon phage. The thing which we were talking about, the first one, कि ये immune हो जाता है, तो वो कैसे immune होता है कि it actually causes changes or conversions in the cell membrane. तो इसके ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं बाइंडिंग के वो ही नहीं रहते, क्योंकि उसके कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट को ये वायरल क्रोमोसोम जो है या वायरल डीएनए या आरएनए जो भी है वो इसको चेंज कर देता है। जब वो इसकी फिनोटाइप को यानी इसके आउटर मेम्ब्रेन को उसके लिपोपॉलीसेक्राइड की कंपोनेंट को चेंज कर देता है, तो फिर नो मोर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस, और उसकी वजह से क्या होता है कि मज़ीद नए जो वायरस हैं वो इस फेजेस जो हैं वो इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर सकते और ये इम्यून हो जाते हैं। Many other lysogenic conversions give the host cell their properties. For example, Corynebacterium diphtheria. It is infected by phage beta. The phage genome encodes diphtheria toxin, which is responsible for the disease, which means only those strain of Corynebacterium diphtheria will cause disease that are infected with phage. लाइसोजेनिक कन्वर्जन्स जो है बहुत सारे जो है पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी प्रोवाइड करती हैं बैक्टीरियम को, जैसे कि अगर हम कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया की बात करें जो डिप्थेरिया कॉज करता है, ये फेज बीटा से इन्फेक्ट होता है, और ये फेज बीटा जो है इसका जिनोम जो है वो डिप्थेरिया टॉक्सिन को इनकोड करता है, विच मीन्स कि जो डिजीज़ है इट इज़ कॉज्ड बाय डिप्थेरिया टॉक्सिन। और अगर वो सेल बैक्टीरियल सेल अगर वो फेज के साथ इन्फेक्टेड होगा तभी वो डिप्थेरिया कॉज करेगा, अदरवाइज नॉट। सो दैट मीन्स के लाइसोजेनिक कन्वर्जन्स आर इम्पॉर्टेंट इन पैथोलॉजी एज वेल, पैथोलॉजी ऑफ द सर्टन ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा सिग्निफिकेंस क्या है लाइसोजेनिक की, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस, व्हाई वायरसेस हैव टू डू इट। इट अलाउज द वायरल न्यूक्लिक एसिड टू बी मेंटेन्ड विद इन अ डोरमेंट होस्ट। डोरमेंट होस्ट कब होता है, जब उसके पास न्यूट्रिएंट डिप्रीवेशन हो जाती है या एनवायरनमेंट उसके पास फेवरेबल नहीं होता, तो देन इट गोज़ इनटू अ डोरमेंट स्टेट, द सेल गोज़ इनटू अ डोरमेंट स्टेट। बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा ये, तो उस डोरमेंट होस्ट के अंदर ये न्यूक्लिक एसिड जो है वायरल का वो आराम करता है आराम के साथ, यानी बहुत कंफर्टेबली उसके अंदर रह सकता है। और when there are many other phages in the environment then there are host cells, जिसको वायरोलॉजिस्ट कहते हैं MOI, यानी मल्टीप्लिसिटी, हाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन। तो उसमें लाइसोजेनी जो है वो इन्फेक्टेड होस्ट सेल को सर्वाइव करने में मदद देता है उन पॉपुलेशंस के अंदर जिसमें आपके पास फ्यू अनइन्फेक्टेड सेल है। फॉर एग्जांपल, ऐसी कोई इन्वायरमेंट है जिसमें आपके पास अनइन्फेक्टेड सेल्स कम है और इन्फेक्टेड सेल्स ज़्यादा हैं, उस सूरत में ये लाइसोजेनी आपकी वायरल क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट कर देता है। और क्या होता है, क्योंकि वो उसकी फिनोटाइप को चेंज कर देता है, तो मज़ीद और जो नेबरिंग आपके होस्ट सेल वायरसेस हैं, फेजेस हैं, वो उस सेल को पेनिट्रेट नहीं कर पाते, उसको लाइस नहीं कर पाते, तो वो सर्वाइव कर जाता है ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर अनइन्फेक्टेड सेल्स कम होते हैं, इन्फेक्टेड सेल्स ज़्यादा होते हैं। सो इट ऑल्सो हैव्स, ये दीज टू आर द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइसोजेनी। सो हमने क्या देखा कि वी कैन सी इट, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ T4 phage that actually causes lytic cycle, lysis of the cell, and then we have seen lysogeny which is caused by temperate phages. If they have two options,
the first one is the same as lytic cycle, and another one is lysogenic cycle. और बहुत सारे many of the viruses undergoes lysogenic cycle, so they can remain inside the host cell for a longer period of time, and they pass on from generation to generation unless and until induction occurs. And induction is what, कि कोई भी आपके पास ऐसा ट्रिगर आ जाए कि ग्रोथ चेंजेस आ रही हैं या यूवी लाइट आपके पास उसकी रेडिएशन से क्या होगा कि ये अपने आप को इस डीएनए से, जो होस्ट का डीएनए उससे सेपरेट कर लेगा और फिर ये लिटिक साइकिल में दाखिल हो जाएगा. So this is all for replication of bacteriophages, and the viral replication is different for different species. As I told you before, this is for bacteriophages, that is the viruses that infect bacteria. Now we'll see how it replicates inside an animal cell in the next lecture. Thank you.